So friends, we have seen that there are three conditions for claiming depreciation. Now if an assessee satisfies all these three conditions, then he will be entitled to claim depreciation. So now let's go on to the next point. What are the methods of charging depreciation? In income tax there are two methods. Straight line method, which you could normally call as the SLM, and the second is called as block of asset method. Now in block of asset method, we will follow the WDV system. That is, depreciation will be charged on the written down value of the asset. However, in SLM method, we will charge depreciation on actual cost of the asset. So let's first go into straight line method depreciation. So guys, first of all, you must remember that straight line method depreciation is not available to all type of assessees. It is only for those assessees who are into power sector. Power sector means you can either generate power, you can have your power plant, or number two, you can distribute power. So only an assessee who is into generation or generation and distribution of power can claim this method of depreciation. Point number two, will not use the normal rates which are used for block of asset method. Here special rates are given in Appendix 1A to the Income Tax Act. Thirdly, this method is optional. It is absolutely at the discretion of the assessee. If assessee wants to claim depreciation on SLM method, he can claim. Or if he wants to claim on WDV method, then he can put the asset in the block and claim depreciation on the block of asset method. So there is no compulsion. SLM is not compulsory. But guys, always remember, claiming depreciation is compulsory, is mandatory. However, the method is optional. For a power sector undertaking, the method is optional. He can claim it on SLM or he can claim depreciation on WDV method by putting the asset in the block of assets. Now, let us see what will happen to an asset on which SLM method of depreciation is claimed, but if that asset is sold in second or subsequent year. For example, we acquired machinery for power generation in the year 10-11. In the previous year, 10-11, we claimed depreciation for the first year, 10-11, and now in the second year, that is 11-12, or maybe in any subsequent year, if we sell this asset, if we transfer this asset, then what's going to happen? We'll compare the sale consideration with the written down value of the asset. And if we are going to compare the sale consideration with the written down value, two possibilities can arise. Number one, the sale consideration is less than its WDV, or number two, the sale consideration is more than the WDV. So guys, let's take an example. If the actual cost of the asset was say 10 lakhs, we have claimed depreciation in say 3 years of rupees 3 lakhs, and we are left with WDV of rupees 7 lakhs. And now in the fourth year, we are transferring this asset. So let's take sale consideration. And the sale consideration is, say, for example, we'll take 3 examples. First one is 4 lakhs. Second case is 9 lakhs. And third case is 13 lakhs. So now let's see what is going to happen. If my WDV is 7 lakhs and I am selling the property for 4 lakhs,
there is a loss. If you compare 74, there is a loss, and the loss is of 3 lakhs. This loss of rupees 3 lakhs, my friends, can you answer one question? Is it a revenue loss or a capital loss? Yes, capital loss. When you are selling an asset, a capital asset, that is plant and machinery, at a loss, you will say that it is a capital loss. But my friend, you are wrong. This is not a capital loss, but is nothing else than depreciation. Guys, you must have studied the definition of the word depreciation in your accounts, in your CPT, which says depreciation is reduction in the value of the asset arising out of wear and tear, use, obsolescence or reflection of time. Depreciation क्या होता है? Depreciation reduction in the value of asset होता है. Reduction क्यों होता है? Because of use in the business. तो हमने एक एसेट परचेज किया था 10 लाख में और उसे हमने बेचा 4 लाख. हमने एक एसेट परचेज किया था 10 लाख में और उसे हमने बेचा 4 लाख में, तो उसका वैल्यू कितने से कम हुआ? उसका वैल्यू 6 लाख से कम हुआ. तो ये 6 लाख क्या? 6 लाख उसका डेप्रिसिएशन. Depreciation is a reduction in the value of the asset. So this 6 lakhs is nothing but depreciation. But I'll ask another question to you. जब हम अकाउंट्स में डेप्रिसिएशन चार्ज करते हैं तो वो एक्चुअल होता है या एस्टिमेटेड? एस्टिमेटेड होता है. इन अकाउंट्स वी चार्ज डेप्रिसिएशन ऑन एस्टिमेटेड बेसिस. तो हमने ये जो 3 लाख का डेप्रिसिएशन चार्ज किया है ये एस्टिमेशन पे किया. लेकिन जब हम एसेट को 4 लाख में बेचते हैं तो हमें पता चलता है कि हमारे एसेट में 6 लाख का डेप्रिसिएशन हुआ. But as you have charged only 3 lakhs means you have charged less depreciation. कितने से आपने लेस चार्ज किया है? 3 लाख से. वो ये 3 lakhs. तो ये 3 lakhs कोई लॉस नहीं होती, ये डेप्रिसिएशन होता है जिसे हमें अभी चार्ज करना पड़ेगा, फर्दर चार्ज करना पड़ेगा. और इस अमाउंट को हम इनकम टैक्स में कहते हैं टर्मिनल depreciation. And this terminal depreciation is allowed as a business deduction under section 32 subsection 1 clause 3. तो जैसे ये 3 लाख का आपने डिडक्शन लिया है, वैसे ही this 3 lakhs will also be allowed as deduction under the head business and profession. So guys, if you sell an asset at a loss, then that loss is allowed as terminal depreciation. So what will happen if you sell the asset at a profit? अगर आप प्रॉफिट में बेचते हैं तो क्या होगा? Let's see. 7 lakhs हमारा WDV है और सेकेंड एग्जाम्पल में हम देखेंगे कि हमने उस एसेट को 9 lakhs में सेल किया. So if my sale consideration is 9 lakhs and my WDV is 7, means we have got a profit of 2 lakhs. और दोस्तों, ये 2 लाख कौन सा प्रॉफिट? रेवेन्यू प्रॉफिट है या कैपिटल प्रॉफिट? सो आंसर इज अगेन दैट दिस इज नॉट अ प्रॉफिट. ये प्रॉफिट है ही नहीं. तो फिर ये क्या? व्हाट इज दिस 2 lakhs? देखिए, if I purchase an asset for 10 lakhs and I sell it for 9 lakhs, where is the profit? There is no profit. Rather, there is a reduction in the value of asset by rupees 1 lakh. यानी हमारा एसेट में डेप्रिसिएशन कितना हुआ है? 1 लाख. लेकिन हमने एस्टिमेटेड बेसिस पे अकाउंट्स में कितना चार्ज कर दिया? 3 lakhs. और उसका हमको डिडक्शन मिल चुका है 3 lakhs का. तो ये 2 लाख क्या? ये 2 लाख उस 3 लाख में से है
जो आपने एक्सेस में चार्ज किया, आपने 2 लाख रुपए से एक्सेस डेप्रिसिएशन चार्ज किया है और आपने उसका बिजनेस में डिडक्शन किया है. So now the government says that this 2 lakh which was allowed in excess will be withdrawn and will be made taxable as a business income because depreciation was allowed as a business deduction. तो ये 2 लाख जो प्रॉफिट है इसे हम बिजनेस इनकम मानेंगे और इसे कहा जाता है डीम्ड प्रॉफिट और उसका नाम है बैलेंसिंग चार्ज. And the relevant section is 41 subsection 2. तो सेक्शन 41(2) के अंदर हम इस 2 लाख को बिजनेस हेड में चार्ज करेंगे एज बैलेंसिंग चार्ज. और अब हम चलते हैं तीसरे एग्जाम्पल. क्या आपने 7 लाख का एसेट जिसका WDV 7 लाख है वो आपने 13 लाख में बेचा है, तो यहां आपका टोटल प्रॉफिट अराइज होता है 6 लाख. So now the question is, how this 6 lakhs will be charged tax? इस पे बैलेंसिंग चार्ज कितना, इस पे बिजनेस इनकम हम कितना देंगे? तो सवाल ये पैदा हुआ कि आपने टोटल डेप्रिसिएशन कितना चार्ज किया? 3 lakhs in the past 3 years. अब अगर एक एसेट जिसका कॉस्ट 10 लाख रुपए है मैं 13 lakhs में सेल करता हूं तो डेप्रिसिएशन कितना हुआ? कुछ भी नहीं. अगर हम 10 लाख के एसेट 13 लाख में बेचते हैं तो डेप्रिसिएशन तो हुआ ही नहीं. रादर देयर इज एप्रिसिएशन इन द वैल्यू ऑफ द एसेट. कितने से एप्रिशिएट हुआ है? 3 लाख. तो वो जो 3 लाख एप्रिसिएशन है कॉस्ट के ऊपर का जो प्रॉफिट है वो हमारा कैपिटल प्रॉफिट. और जो हमने डेप्रिसिएशन चार्ज कर दिया था जबकि हमको तो करना ही नहीं चाहिए था क्योंकि हमारे एसेट पे डेप्रिसिएशन हुआ ही नहीं है, वो 3 लाख हम पूरा विड्रॉ करके उसे बिजनेस इनकम में ऐड कर देंगे. तो ये 3 लाख जो आपने डिडक्शन लिया है, दिस 3 लाख विल बी विड्रॉन एंड चार्ज एज बिजनेस इनकम. उसको हम बैलेंसिंग चार्ज कहेंगे. और 10 लाख के ऊपर 3 लाख का जो प्रॉफिट है, कॉस्ट के ऊपर का जो 3 लाख का प्रॉफिट है, उसे हम कैपिटल गेन हेड में चार्ज करेंगे. अब वो 3 लाख कैपिटल गेन हेड में जाएगा. मैंने ये नहीं कहा है कि वो 3 लाख अमाउंट हम कैपिटल गेन की तरह टैक्स करें. उसका हम कैलकुलेशन करेंगे सेक्शन 50A के हिसाब से. और वो कैलकुलेशन कैसे होगा वो हम आगे के चैप्टर में देखेंगे when we go to the head capital gains. So right now we'll only write here, हम इतना लिखेंगे कि बैलेंसिंग चार्ज जो बिजनेस हेड में टैक्सेबल होगा अंडर सेक्शन 41(2) दैट विल बी 3 lakhs. और जो बैलेंस प्रॉफिट है उसको हम ले जाएंगे कैपिटल गेन के हेड के अंदर और उसको हम बाद में चार्ज करेंगे सेक्शन 50A के हिसाब से.